GBP CAD hit our first stop loss of the day, and yeah, this week we are minus 3%. Here is the trade on euro out that is right now running in profit. Wow. Assalamu alaikum guys, hope you are all well. I just finishing the vlog that you already are seeing. मैंने कितनी बार बोला है कि ये ट्रेडिंग एक शॉर्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टाइम बिजनेस है। अपने पैसों के साथ खेलना होता है, तो ये एक बच्चों का खेल नहीं है। तो जो भी आप करते हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये पैसे भी डूब सकते हैं, आप भी डूब सकते हो और कोई बचाने भी नहीं आएगा आपको। लेट्स गो फॉर अनदर वीक एंड लेट्स गो फॉर मोर प्रॉफिट्स। A very interesting week is ahead. We have to be prepared, and that is the thing we're gonna do together. On Monday we don't have nothing. On Tuesday we have news from out, GBP and USD. For out it came positive. GBP claimant count change, it came negative. That means there are more people in unemployment situation. We have core PPI that came negative, and the PPI monthly came, the another PPI come equal. On Wednesday, we have the most interesting trade for the week, and that is NSD versus something. We will be looking for some short because they are maintaining the interest rate in 5.50%. That is negative for the currency. We have CPI of GBP that it's worse. Remember, if it came positive, that is negative for the currency. And if that came negative, that is positive reaction for the coin. We have CPI that we're gonna be looking at it in investing, because I don't trust in sometimes in some details in Forest Factory. We have the year CPI that they are maintaining, but the another CPI it's 3.2% in comparison to 3.3. So we maybe have some bullish reaction on DXY. In the same case, we have positive CPI monthly. So we have some divergence, and it's better to don't take any trade on USD. On Thursday, we have an employment change that came worst because there are more people in unemployment situation. We have unemployment rate that came 4.1%, same as the previous one. We have GDP on GVP that came negative, and then we have retail sales score that came negative, retail sales that came positive, and unemployment claims that came worst in this case because they are more. Finally, on Friday, we have retail sales monthly that came positive. We have some sort of divergence in some details because in the beginning of the year we have some positive news, we have negative news. How we can implement this in the charts and how we can take successful trades. Let's take a look at it. We don't gonna take any look on DXY, USD or USD CAD. None of my business. GPNSD, we will be looking for this entry point in case there is a sort of retracement. GBP CAD is in almost in an entry point for this week. GBP CAD will be the first trade of the week. We will be looking in euro out for this entry, this buy. Okay, let me have the charts clean. We'll be looking for this bullish momentum for this week. NSD card is the clear trade that we'll be looking. We may be looking for some sort of retracement, something like this. And then we have the interest rate and we have the down momentum. That will be the fantastic start of the week. And out NSD, we will be looking for this buy. Let me get more precise in this entry. That would be the entry for this week. इस हफ्ते हमारी मेन चीज़ यही होनी है कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी हो और 1% से ज़्यादा हमारा लॉस ना हो, ठीक है, जैसे पिछले हफ्ते हुआ था. That will be the focus for this week. GBP CAD hit our first stop loss of the day. Nothing to worry about that. Just follow the trend. I thought GBP CAD we had negative news. We will have some bearish momentum in the beginning of the week, but in London, in New York session, we are having this bullish momentum. In NSD CAD is same. We are just in range. Meanwhile, euro out is about to hit my entry point, and it's going to be my first trade since 2 weeks.
Hello. Good morning, family. Happy Tuesday, 13th of August 2024. Let's take a review of what happened in this operation that I took this night, and it hit stop loss on GBP Gen. Currently, we are in this position in buy. I think it would create a new bullish momentum ratio 1-2. How is going to develop this operation? And yeah, we are in minus 2% this week. Here are the two operations that are left on NSD CAD and GBP Yen. Unfortunately, this trade hit me a stop loss as well. Well, we are just about to hit stop loss, 1 pip far from the stop loss. And yeah, we are just this week we are minus 3% if this operation hit stop loss, and NSD CAD is also about to hit stop loss, so we'll be minus 4% this week. Bad start of the week. We are on Tuesday and we are just minus 4%. Family, as you guys can see right now, this is a whiteboard when I put 95 weeks only trading euro out. That would be my favorite pair for the entire process, because I think this is part of the process of this 95 weeks. This is the first week of August when we hit our first TP. This was the past week where we didn't have any trade in euro out, and this is the week that we are right now. Okay, this will be the last week of the year. Okay, week 23. All my morning was doing this. Here is the trade on euro out that is right now running in profit. Hope for a TP, first TP of the week in my personal account, because in the funded account it's almost minus 3, minus 4%. It's not because of my bad analysis, because sometimes happen and we have to get used to it, or taking some losses. It's part of the process. Core PPI and PPI monthly, it's about to come in less than 30 seconds. Let's see how it's going to be the reaction on the markets. 3, 2, 1. It came worst, and it came worse than we are expecting. I didn't have the chance to close the 80% because I have the news, but in this case it was a good start of the week in the personal account after 10 days without taking any trade on my personal account. Let's inaugurate this board with the profit of today, euro out. Let's take a look at what is happening right now in the market, because it hit our fourth stop loss of the week, the second or the third of the day. I don't know what is happening right now with NSD CAD, but it happened the same thing on November 2023. We were expecting a bearish momentum, and it created for us stop loss, this one, and it happened the same thing. We were expecting a bearish momentum, a short over here, and then it created high on 28th of November. GPNSD, we had opportunity right over here to take a buys. Let's see if we take the buys for tomorrow morning, because we have interest rate tomorrow at 4 a.m. So let's finish the coffee and start the week at the gym. Wednesday, 14th of August 2024. Let's take a look before the CPI of August. What happened to the market, what happened with NSD, with the position that we were losing since Monday, and finally it came down. Let's take a look fastly before the news. NSD, we have this down momentum, while it was the interest rate of NSD, and if you can see here, we have the interest rate and they cut 0.25%. So we have that bearish momentum at that time. मैंने गाइस इधर से स्टॉप लॉस हटा दी थी, ठीक है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि न्यूज़ में क्या होगा, और मैं पूरी रात सो नहीं पाया. दोनों व्हाई लेटर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, एंड देन हैपेंड दिस डाउन मोमेंटम, एंड इधर ब्रेक इवन में मैंने ना स्टॉप लॉस फील कर दिया था. कभी भी आपने ना स्टॉप लॉस मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ ट्रेडिंग. CPI of year, it came 2.9. That is in short term negative, for week is Y, but is positive in the long term. Interesting week, we are in minus 4%. Yeah, something we have to improve is don't quit your stop loss. Your stop loss is your best friend. After a very boring workout, I just came to my favorite place. I don't know why, but
I was feeling very low today. I was very uncomfortable with the trading. I was uncomfortable facing this week of -4%. Even though my personal account was going much better than a couple of months ago. जश्न आज़ादी मुबारक हो सब पाकिस्तानियों को. कल इंडिया के बारे कल इंडिया को मैं विश करूँगा. Today we are on green. I am willing to go to Madrid on Friday. बहुत दिल कर रहा है जाने को ताकि थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाए, दिमाग थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाए. Yeah, enjoy this views guys. Hello. Good morning family. 15th of August 2024. I opened this trade on GJ and we are currently in drawdown. If this hit a stop loss, this would be the 5th stop loss of the week. देखते हैं क्या होता है मार्केट के साथ, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि स्टॉप लॉस ही जाएगा. 5th stop loss of the week just failed. This is the funny account, okay, and we are in the phase number 1. I expected to start a week properly, but in this case all the trades went against my analysis of the charts. Till next week I hope. Hello family. Final day of the week, 16th of August 2024. I am about to take a bus in 2 hours and a half. और मेरा हाथ भी बहुत ख़राब है, इस वजह से 2 दिनों से जिम पे नहीं गया. और मेरी बॉडी भी है थोड़ी बहुत ऐसे रिलैक्स हो जाएगी, दिमाग भी थोड़ा शांति पड़ जाएगी. आराम से नेक्स्ट वीक को दोबारा रिस्टार्ट करेंगे सब कुछ. आने से थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि जब से पाकिस्तान से आया हूँ की जगह पे गया ही नहीं. इनफैक्ट बस उसी वीक गया हूँ जब माँ बाप के साथ गया हूँ. बट या इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वीक. अभी लेट्स टेक अ रिव्यू व्हाट हैपेंड दिस वीक इन ऑल द ट्रेड दैट आई टुक. On Monday, I didn't take this trade, okay, because on Monday sometime they happen that we are not sure about taking any trade on GJ. On Monday, I take this short, but while I was sleeping and hit stop loss, and then I take this buy. This buy I didn't have to take it because if I already take a short, I don't have to take a long. On Wednesday, I didn't take this trade. Okay, I didn't take this trade because क्योंकि न्यूज़ थी. ठीक है, न्यूज़ थी जेन के बारे में, और मैंने इसी वजह से इसकी ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि मैं श्योर नहीं था लेने के लिए. ठीक है, -1, -2 and that is the -3% in GJ. that hurt me very much, क्योंकि जब मैंने ये ट्रेड ली थी मैं बाहर जा रहा था. ठीक है, घर आया था और मैं क्या ये स्टॉप लॉस रिमूव करूँ कि ना करूँ. फिर मैंने दोबारा वही सोचा कि अगर रिमूव करूँगा फिर दोबारा वही करूँगा, आप सबको झूठ बोलूँगा, अपने आप से झूठ बोलूँगा. और जब न्यूज़ आई थी इट केम ऑल द वे अप. अगर हमने ये ट्रेड होल्ड किया होता ना, ये 12.87% हमको दिया होता. कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है. ये बहुत मुझे दुख हुआ था इस ट्रेड को लेके, लेकिन क्या कर सकते हैं. JPNSD द ओनली ट्रेड, अगर हमने लिया होता ये भी प्रॉफिट होता. हमारी एनालिसिस यही थी कि न्यूजीलैंड की इंटरेस्ट रेट आ रहे, उन्होंने कट किया 0.25% और ये ऊपर चला गया. ठीक है, हाँ ये हमने लिया था क्योंकि मैं उठा था स्पेशली देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और स्टॉप लॉस हो गया था -4%. आज मार्केट बंद होने से पहले ये दोबारा ट्रेड खुल जाए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक के रिजल्ट जो है ना यूरो के लिए ख़राब हो. फिनिश करने से पहले इतना कहूँगा कि जब आपको स्टॉप लॉस आ जाते हैं ना, इसका ये नहीं मतलब कि आपकी ट्रेनिंग बर्बाद हो गई है. कभी कभी होता है जो रेटियो हम ढूंढने जाते हैं जिसे GJ में है, even though you are in -3%, the trade that I took is ratio 1-2. 2 ट्रेड में हम दोबारा almost break even पे आ सकते हैं. Nothing to worry about that. Sometime happen and we have to just prepare our mind to this number and we have to play with the numbers. Okay. वेल हम मैड्रिड पहुंच गया है. मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ मैं 3 साल पहले ईद वाले दिन, 4 साल हो गए, ईद वाले दिन मैं इधर आया था. एंड इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग जर्नी. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ.
जो कि है कितों है मैड्रिड की जगह पे आए हैं। कुछ जगह तो असी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत प्यारी जगह है। वाओ Wow. De cuero, leather. Datar de la Segunda Guerra Mundial. Qué guapo. Y está en pintura. Y bueno, aquí tengo que hacer esto, mira. Esto puedo grabar, ¿no? Sí, pero aquí no sale nada. No sé, yo lo veo muy sucio. Sí, huele a pintura recién, ¿no? Mira, ¿ves? Esta parte lo he quitado porque tenía que ir los dientes aquí. Y lo tengo encima de la mesa del taller. Así va aquí. वो जहाज आ रहा है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, दातर पाजी के दफ्तर हम आए थे, वो है जहाज़ों का इंजीनियर है। तो बहुत प्यारी जगह है। कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी है इट्स टोटली क्रेजी। लेकिन इधर हम इस मकसद से आए थे क्योंकि पाजी को हमारी मदद की ज़रूरत थी ट्रेडिंग के बारे में। तो पाजी को पूछना चाहेंगे कि आपके लिए ट्रेडिंग मुश्किल है, नहीं मुश्किल, क्या है आपका कहना? हेलो एवरीवन, सारे तो पहले तो मैं अपने भाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। तो आप सोचते हो कि ये जो देसी लोग जो साढ़े देसी दे पाकिस्तान इंडिया दे कोई भी बंदा कर सकता? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ सही हो गए। सही बात। इंशाल्लाह भाई भी ऐसा ऐसा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और जब चीज़ें बेहतर जाएंगी तो फिर दोबारा पाजी को लेके आएंगे तो कहेंगे पाजी ने भी कर लेता है। अभी हम चल रहे हैं एक दूसरे शहर दोस्त को मिलने, जो भी वो भी ट्रेनिंग में है, और अपनी शॉर्ट वेकेशन को एंजॉय करते हैं। क्यों पाजी? तो गाइस अभी हम दोस्त के पिंड आए, अभी मीटिंग हमने ख़त्म की है। इट वाज अमेजिंग। अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अभी उन्हीं लोगों के साथ, बट दिस प्लेस इज इनक्रेडिबल। इस आविला इधर शादी हो रही है, ये उस दौरान का। ¿De qué siglo es? Robert, ¿de qué siglo es la muralla? वेल फैमिली, मीटिंग ख़त्म हो गई है। इट्स टाइम टू गो बैक होम। कल हमने वापस जाने का, ठीक है। तो जो दिन रहते हैं 1.5 दिन मैं अपने भाजी नाल इंजॉय करांगा। तो भाजी किंज लग्या तुहानू? बहुत वधिया लग्या, नवीं चीज़ां सीखने को मिल गई रॉबर्ट ਤੋਂ। क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? सारा दिमाग ਜਿਹੜਾ बाकी ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ट्रेनिंग के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, और दातर और भाजी और मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। See you. बाय बाय।